source. Assalamu alaikum, welcome back. You're watching Just Law. I have a guest with me, Arnab Sen, who is an immigration consultant. And my name is Saleh Ahmed. I specialize also on immigration and family matters. Of course, we're here to discuss আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আর বাংলায় জিজ্ঞেস করতে চান তে বাংলায় জিজ্ঞেস করেন আমরা দুইও আমি আর আরনাব আমরা দুইজনে বাংলা বুঝি আচ্ছা next go to the next caller. Assalamu alaikum. Where are you calling from? Walaikum Assalam. I'm calling from Milton Keynes. Okay, Milton Keynes. What's your question, please? My question is, can I speak in Urdu, please? Yeah, you can speak in Urdu. अच्छा हमारे पास ना एक मकान है जिसमें हमने 3 साल पहले किसी को किराए पर दिया हुआ था वो मकान 2 साल तक तो अच्छा खासा यानी वो रेंट भी पे करती रही and everything was going really smoothly. Then she went on DHS. उसकी जॉब खत्म हो गई जो भी था. Then DHS didn't give her enough money. So she was जो shortfall था ना वो अपनी पॉकेट से देती रही हैं. Then it was like she was missing payments, you know, some months and all sorts. And then when we did a checkup, you know, on the house, तो इतना ज़्यादा इन्होंने ख़राब कर रखा था. 12 तो बिल्लियाँ रखी थी, 4 कुत्ते रख लिए थे घर में without even asking. Anyway, बहुत तमाशा बनता रहा. In the end, we decided to give her a notice. तो जून में इनका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो we did not renew it. And then हमने इनको अगस्त की बिगिनिंग में हमने इनको सर्व किया नोटिस. तो कहने लगी ठीक है मैं काउंसिल के पास जाऊंगी और काउंसिल हाउस के लिए अप्लाई करूंगी और ऑल सोर्स करते करते इवेंचुअली काउंसिल वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं. She herself is not looking for any other private house and she's not even paying the full rent. तो अब ये है कि इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? घर तबाह हो रहा है. Okay, I think landlord, bad tenant, not paying rent on time, shortfall they were paying. Was the DSS paying part of the rent? Yes, DHS was paying part of the rent. Part of and the that rent. was the reason she was, the lady was topping it up, you know, with the shortfall. So has the DSS stopped paying? Is that why she can't pay the rent anymore, or what's changed? Yeah, what happened was then because she wasn't paying us on time, the DHS was paying her in the beginning, like, you know, and she used to pay it to us. It was fine in the beginning, but when she started faulting it, not paying it on time, and sometimes she used to sort of not pay for 2 weeks, and then she would come with the money and all that. It was very irregular. So in the end, you know, I wrote a letter to the council, the benefit office, and I said, you know, this is happening. So they immediately changed the payments system. They gave it directly to, it's my son's house actually. So they gave directly money to my son in his account. But the shortfall has never been paid by the tenant. So we are losing about £120 a month. Okay. I see. Okay. And what, that has accumulated over many months, or? Yes. How much is overdue now? About 800 and some money, 800 and I think 80 or something. Okay. Generally speaking, I think you have to notify her in writing that she has rent arrears that she hasn't paid, and then see if what she would suggest she can do, and then, you know, speak to a lawyer local to you and explain the situation, because under UK law you cannot just throw her out. You have to go through the proper channels. So £800, I don't think right now you cannot really change the locks and say, right, she's behind on her rent and she has to leave. So a lot of the times, if you sort of let her know what your intentions are and that she should resolve it, I think you may be able to achieve something. Sometimes going to a lawyer and a lawyer's letter may actually fix the problem. But if it doesn't, then you can go through the process of giving notice, waiting the relevant period, and then getting them evicted. But this may take 3 to 5 months.
मैं यही ऐड करना चाहता हूँ आपके बारे में कि मेरा एक क्वेश्चन है कि वो क्या कोई कंसेक्यूटिव मंथ पेमेंट नहीं किया है? अगर कुछ कंसेक्यूटिव मंथ्स उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो ये लॉ में है, टेनेंसी लॉ में, कि एविक्शन आपके ऊपर उसके आपके एविक्शन का राइट्स है। और अल्टीमेटली ये मैटर आपको काउंटी कोर्ट में ही एंड अप होना पड़ेगा। आप इसके लिए जो जो प्रोसेस है आप कोर्ट में ले जाने से पहले वो फॉलो कीजिए, क्योंकि नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, उसको रेलेवेंट टाइम सर्व करना। नोटिस सर्व करके आप अगर नहीं सर्व करते हो तो कोर्ट आपको रेफ़र बैक करेगा कि नोटिस सर्व कीजिए सेक्शन 42 में। तो नोटिस सर्व करने के बाद मेरे ख्याल से आप ये लॉयर के भी हेल्प ले सकते हैं, सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो के भी आप हेल्प ले सकते हैं फ्री में के नोटिस सर्व करवाने के लिए। और नोटिस सर्व करवाने के बाद एक रेलेवेंट पीरियड ओवर हो जाने के बाद आप ये मैटर डायरेक्टली काउंटी कोर्ट में ले जा सकते हैं। और काउंटी कोर्ट में जो है आई थिंक 80 पाउंड या कुछ कोर्ट फ़ी ऐसे लेके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपका सारा क्लेम उसमें लिख के आप डाल सकते हो। और काउंटी कोर्ट ज़रूर इसके बारे में आपको जजमेंट देगा आपके फेवर में। Okay, sister, thank you very much for that call. Right, next caller. Assalamu alaikum. Where are you calling from? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. असल में मेरे एक दो क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा 2 साल के स्पोज वीज़े पे आया हुआ हो और इंडेफिनेट लगने के कितने अरसे बाद उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसके पास एक आध बार आप कह लेंगे लिटिल नॉट डोमेस्टिक वायलेंस बट समथिंग भी इन्वॉल्व हो, तो क्या वो उसका इंडेफिनेट लगने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि उनकी जो वाइफ है ना वो थोड़ी ड्रग एडिक्टेड हैं, तो वो गायब बगैर ट्रबल करती रहती हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा होने वाला है और एक बेटी पहले पैदा हुई है। तो उनका फिर लीगल स्टेटस क्या हो सकता है जस्ट इन केस वो ना है उनको अगर यहाँ पे इंडेफिनेट करा के दे तो? Okay, there's 2 questions. 2 क्वेश्चंस है आपके। 2 क्वेश्चंस है। मैंने पहला क्वेश्चन तो आपका आंसर ये है कि 3 साल बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट आप उनको मिल सकता है इंडेफिनिट लीव के लिए। 2 साल के बाद ही वो सेट एम एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद 1 साल के अंदर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल जाएगा। पर ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए नेचुरलाइजेशन फॉर्म में जो अप्लाई करना है उसको। पर सेकंड बात आपने जो बोली वो मुझे थोड़ी बात क्लियर नहीं हुआ, ये कि उसके अगेंस्ट में क्या कोई जजमेंट कन्विक्शन है या कोई कोर्ट ऑर्डर है? अगर है तो फिर चीज़ें डिफरेंट होता है। ये मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। I think far as I understood from the caller, the first one is if they're on a spouse visa from before, they were given spouse visa for 2 years, and after that they apply for indefinite, which is 1 more year. After that they can apply for naturalization to become British. So the total route time is 3 years. Under the new rules effective from 9th of July 2012, the route has become 5 plus 1. So spouse visa for 5 years plus 1 year indefinite, and then after that they can apply for naturalization to become British. Where there is allegation of domestic violence, so under the old route or the new route, if the duration has not been completed, so someone comes here on a spouse visa, instead of completing 5 years, they've completed say 1-2 years. If that's the case and they have to leave that marriage, that arrangement, because they suffered domestic violence, long as there is evidence from the police, from the doctors, from social services and other agencies, and long as they have left the property under those circumstances, then under UK law they will not get deported back to their home country. Rather, they will be able to apply for settlement, which is indefinite leave to remain, even though they haven't really seen the whole period through, and they would not need the support of their sponsor. So in those circumstances, and they do have quite high threshold, yes. So if they accept that, they will give the person settlement, even though they haven't lived here for the 5 years and the relationship has broken down. Okay, I think we'll take the next caller. Assalamu alaikum, what's your name, where are you calling from? Assalamu alaikum, can you hear me? I'm Jawad and I'm calling from Peterborough. Okay, what's your question? My question is, मैंने जो है ना मई में मेरी शादी हुई है यहाँ पे, तो मैंने जून में रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो मेरी वाइफ अभी काम कर रही है, तो उसकी वेजेस जो 18,600 वाला है ना वही है, बट वो कैश इन हैंड ले रही है। जो वेजेस स्लिप बन रही हैं वो कैश इन हैंड बन रही हैं। तो इधर मुझे पीटरब्रो में एक लॉयर था, उन्होंने कहा था कि वेजेस
इस तरह का कोई कानून नहीं है। कैश इन हैंड अगर आप केस जमा करवाएंगे तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। बट ये वो कह रहे थे कि आपकी वेजेस जो है बैंक में जानी चाहिए, तो मुझे इसमें ज़रा भी डाउट है, बिकॉज मेरे 2 महीने से वेजेस स्लिप बन रही है। सो अगर ये जो बैंक वाला है तो वो तो फिर 2 महीने वाली बेकार होगी ना। तो मेरा मैं स्टूडेंट यहाँ पे आया था, मेरा 28 फरवरी 2014 को वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान से अप्लाई करूँ या यहीं से ही? I think the lawyer is right. You have to मैं हिंदी में उर्दू में बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि लॉयर ने ठीक ही कहा है। आपके उन्होंने एविडेंस बहुत ही स्पेसिफाइड कर दिया है आपके। एक तो है कि पे स्लिप, दूसरा है बैंक स्टेटमेंट, उसमें दोनों को कोरोबोरेट करना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो रिस्क रिफ्यूज़ल का रिस्क है। आप मेरे ख्याल से इधर से अगर आप करेंगे तो एक रिस्क चांस लेना होगा पैसे के ऊपर कि आप जो वीज़ा फ़ी पे कर रहे हो। अगर पाकिस्तान से करोगे टाइम लेके, आपके 18,600 मिट कर रहा है और आपके इंग्लिश लैंग्वेज भी हालांकि आप इधर से पढ़े हो तो A1 ज़रूर मिट कर रहा होगा, वो आप लॉयर को दिखा लीजिए तो फिर एंट्री क्लियरेंस में मुश्किल नहीं होगा। Inshallah. There's advantage and disadvantage in applying from abroad or in the UK. We usually suggest people applying within the UK if they meet the requirements. So if they're in a relationship, the relationship is not disturbed or there is no distance between the two parties. And if there is a rejection, they can appeal and the parties, the husband and the wife will still be in the UK. Whereas if you were to go back to Pakistan and for whatever reason they rejected or took too long to decide, then you'll be separated from your spouse, and that's not a good thing. Also, next year they may introduce new requirements, they may change things. Yes, I think best would be to lodge the application and wait for it, and in the meantime you will get some period of time to get your pay slips and settle your bank statement as well. क्योंकि अभी जो रूल है, अगर 18,600 आप मिट नहीं कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन होल्ड में डाल रहे हैं। तो उस पीरियड में आपका बैंक स्टेटमेंट, आप पैसा बैंक में डालिए, सारे के सारे रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। अगर रिफ्यूज़ भी हो गया तो फिर आप अपील में जाके शायद वो दिखा सकते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स आप ज़रूर इनकम ठीक तरीके से की है। Okay, thank you very much for that question. Next caller, what's your name? Where are you calling from, please? Assalamualaikum. Assalamualaikum. What's your question? Sorry. जी, मेरी क्वेश्चन कुछ अलग सा है, मकान का मसला है जी। Okay. जी, वो मॉर्गेज का मसला, इंडोमेंट पॉलिसी हमने किया। Okay. तो अभी जब हमने मकान खरीदा था उन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया कि जब मिचो हो जाएगी उस वक्त आपको मिलेगी 29,000 बोनस। लेकिन अभी वो लोग कहते हैं नहीं, बोनस नहीं मिलेगी, आपका शॉर्टफॉल हो जाएगी 25,000 शॉर्टफॉल हो जाएगी, वो आपको देना पड़ेगी। तो अब इस हालत में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई मशवरा? आपके वो रिटन कोई एग्रीमेंट था कि एंडाउमेंट एग्रीमेंट में जे कि 20,000 पाउंड आपके बोनस मिलेगा? हेलो जी, आपके कोई रिटन एग्रीमेंट था? वो तो हमने पढ़ी नहीं। जिस वक्त हमने मकान खरीदी थी उस वक्त मेरी मियाँ था। अच्छा। हम मियाँ बीवी दोनों के नाम के थी। अच्छा। लेकिन अभी मेरी बदकिस्मती वो दुनिया से गुजर गई। अच्छा। 15 साल हो गई। मैं समझ रहा हूँ आप बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। मेरे ख्याल से आप एक काम कीजिए, आप सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो में जाके उसका पेपर दिखाए और पेपर में जो मदर डॉक्यूमेंट था, जो एग्रीमेंट था, उसमें ही लिखा हुआ होगा कि कौन से बेसिस में आपका एग्रीमेंट हुआ है और कौन से बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए। और जो शॉर्टफॉल की बात वो बोल रहे हैं वो किस बेसिस पे वो शॉर्टफॉल हुआ है ये भी उसको क्लैरिफाई करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप इमीडिएटली एक लॉयर का हेल्प लें, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे शायद या पढ़े नहीं है। वो ज़्यादातर लीगल लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और लेमन के वो समझ के बाहर भी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉयर का हेल्प लेना चाहिए इस मौके में, वो डॉक्यूमेंट देखा के। Okay, thank you very much for that call. I don't know, investors are coming to the UK. Yes. What are the requirements if I wanted to, say I was abroad and I wanted to come to the UK and I wanted to get a visa as an investor? What options do I have?
Investors, when you use a term investor, because the Home Office has segregated two terms, so separated an entrepreneur and investors. Entrepreneur visa is for those who, who wants to invest 50,000 to 200,000 pound, and they are physically involved in the business or actively involved, not physically always. They can be 6 months out of the country and 6 months inside the country. For entrepreneur visa, you need to have the required fund. The fund has to be accessible in the United Kingdom, or if the fund is abroad, there has to be that can be transferable to United Kingdom. And then there is a requirement of maintenance for you, like if you're coming from outside, they require £3,100 for main applicant to be maintained for 90 days before application. Very importantly, there is no such requirement that £200,000 has to be for a particular period in a bank account before applying. But if you are not showing for 3 months in a bank account, regulated bank account, better to clear the sources of where you are getting this money from. And the one you said, and also the English